हाँ जी, एंड वी आर लाइव। अस्सलाम वालेकुम जी। राइट टू प्रोटीन पीके के जानिब से खुश आमदीद। मैं हूँ खालिद मलिक। क्या हाल है आपके? पिछले लाइव शो के बाद जो आपका हमें जो फीडबैक मिला है उसके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया। भरपूर फीडबैक मिला है आपका, और बल्कि उस शो के बाद जो सवालात हमें मिले, अफसोस ये था कि हम जितने भी आपके सवाल थे वी कुडंट गेट टू ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं कि आज उन वो जो सवाल हैं आपके, आज उनके हम जवाब भी दे दें। आई हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट जॉइनिंग अस टुडे। लेकिन इससे पहले कि हम मेहमान की जानिब जाएं, आपको मैं याद दिलाता चलूं कि एक गिव अवे भी है आपके लिए। लेकिन वो सवाल क्या है वो थोड़ी देर में आपको हम बता देंगे और आपको पता भी चल जाएगा। लेकिन चलते हम अपने मेहमान की तरफ। जब भी इनसे मुलाकात करता हूं, हमारी मुलाकात के बाद हमेशा हमेशा इल्म में इजाफा होता है, और यही नहीं बल्कि एक इंस्पिरेशन भी मिलती है। शी इज आवर एक्सपर्ट फॉर दिस live show today, brought to you by Right to Protein PK. She is a name that many in Pakistan wellness and lifestyle industry are familiar with. She is an interval trainer, sports nutritionist, weight and diet specialist. She is the founder, director of Mantahaa Private Limited, body image consultant. Mantahaa, Tareen. Assalamu alaikum, welcome. List तो बहुत बड़ी है आपकी, माशाल्लाह. You've done a lot. Thank you for a wonderful introduction, and I hope that इस दफा भी आपके इल्म में काफी इजाफा हो. मैं तो पूरी उम्मीद के साथ आया हूँ, तो मैं तो कुछ लेकर ही जाऊंगा. लेकिन इससे पहले मनता कि हम अपनी गुफ्तगू को शुरू करें, एक मैसेज है राइट टू प्रोटीन पीके की जानिब से. लेट्स गो टू द मैसेज राइट नाउ. पाकिस्तान भर की माओ का एक ही सवाल है, अपने बच्चे को ऐसी कौन सी ठोस ग़िज़ा खिलाऊं जिससे जान बने. ग़िज़ा की असल जान इसमें मौजूद प्रोटीन में है. वैसे तो हमारे खानों में फल, सब्जी, दालें ये सब शामिल हैं, लेकिन मुर्गी और अंडे के अंदर प्रोटीन की मिकदार सबसे ज्यादा है, जो बेहतर भी है और बजट में भी है. अंडा और मुर्गी है ग़िज़ा की जान, सेहतमंद बनेगा पाकिस्तान. अंडा और मुर्गी है ग़िज़ा की जान, सेहतमंद बनेगा. अंडा और मुर्गी है ग़िज़ा की जान, सेहतमंद बनेगा पाकिस्तान. अंडा और मुर्गी है ग़िज़ा की जान, सेहतमंद बनेगा पाकिस्तान. हाँ जी, अंडा और मुर्गी है ग़िज़ा की जान, सेहतमंद बनेगा पाकिस्तान. आप मंतहा तरीन हमारे आज के मेहमान. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. You're most welcome. प्रोटीन के ऊपर अगर आप आम दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं, या जो लोग डाइट कॉन्शियस, इसके हवाले भी हम बात करेंगे. जो लफ्ज डाइट है बहुत खौफनाक लफ्ज है ये. बट हाउ इम्पोर्टेंट इज प्रोटीन इन आवर लाइव्स? Well, a human body, which we all are humans. और हमारी बॉडीज जो हैं उनकी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं. जैसे आप घर बनाते हैं, आप ब्लॉक्स यूज करते हैं, तो हमारे बॉडी की जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है जिसके ऊपर ये पूरा कंस्ट्रक्शन हुआ है, वो एक्चुअली आपका प्रोटीन है. अगर हम बिल्कुल, अगर मैं इसको एक लॉजिक से समझाऊं, वो ये है कि हमारे हर ऑर्गन हमारी बॉडी का, वेदर इट्स स्किन, वेदर इट इज योर नेल्स और योर स्पाइनल कॉर्ड टू योर हार्ट टू योर लंग्स, ये सब जो हैं ये सेल्स से बने हुए हैं. और सेल्स के अंदर होता है प्रोटोप्लाज्म, द लिक्विडी सेमी लिक्विड जो मैटर होता है, दैट इज बेसिकली मेड ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स. तो प्रोटीन की उधर जो हमारे प्रोटोप्लाज्म में सेल्स में जो मकदार है वो अमाइनो एसिड्स ज्यादा है, उसकी ग्रामेज ज्यादा है. तो कमिंग बैक टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर बॉडी, प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक विदाउट विच यू कैन नॉट at all function to your best optimal level. यानी कि प्रोटीन जो है बहुत अमूमन ये समझा जाता है. और लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू डाइट, क्योंकि ये सिर्फ खवातीन में नहीं बल्कि अब मर्द हजरात जो हैं वो ये समझते हैं कि मुझे वेट लूज करना है, हाई प्रोटीन डाइट पे जाना चाहिए. डज
I don't know, protein make you lose weight, gain weight? What does it do to us? Well, this is a myth. Yes, the consumption of protein itself makes you fuller for longer. And obviously, protein के कंजम्पशन की वजह से आपके मसल मास इंक्रीज होता है, आपकी जो है वो परफॉर्मेंस एट जॉब एट हैंड इज बिकम्स बेटर, you achieve your goals of weight loss or weight gain With protein? with protein faster. ठीक तो है। ये एक मिथ है कि सिर्फ ठीक है। प्रोटीन से वेट लॉस होता है, प्रोटीन से वेट, इट डिपेंड्स ऑन द डाइट, प्रोटीन से वेट लॉस भी हो सकता है, वेट गेन भी हो सकता है. नाउ वेयर यू आर टॉकिंग अबाउट the conditions, like you know कि बहुत से मर्द हजरात और like of course there's female and female, वो समझते हैं कि ज्यादा प्रोटीन खाने से उनका वेट लॉस होता है. तो नहीं, ऐसे नहीं हो सकता. अगर आपको याद हो कि काफी डाइट्स थी जो प्रोटीन बेस्ड थी, जैसे एटकिंस है, तो एटकिंस जो है वो कम्प्लीटली एक प्रोटीन बेस्ड डाइट है जिससे काफी लोगों की जो है वो वेट लॉस हुआ था. बट दैट इज नॉट द वे टू गो अबाउट इट, बिकॉज आपको कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की एसेंशियली जरूरत होती है. मतलब हर इस ड्रामे का हर किरदार बहुत जरूरी है. हाँ, बट प्रोटीन आपके गोल के मुताबिक इट डिपेंड्स. यू नो, ज्यादा प्रोटीन खाने से यस you will be fuller for longer, but it doesn't mean that you will lose weight. So let's get back to that. So okay, अमूमन जो खवातीन और मर्द हज़रात हैं वो सब ये चाहते हैं कि वेट लूज हो. हाँ. अब प्रोटीन डाइट में शामिल करना है. हाँ. लेकिन किस हिसाब से शामिल करना है? इज देयर लाइक अ फॉर्मूला कि अगर यू नो आई वांट टू लूज वेट, पेट को कम करना है मिसाल के तौर पर, है ना, तो प्रोटीन मतलब कितना कंज्यूम किया जाए, या यू नो इज हाउ डू आई नो? Okay, so with that, first I will look at your activity levels. सही. And also as a client आप मेरे पास आओगे, मुझे आप अपना lifestyle बताओगे कि for instance I am let's say a housewife जैसे, or I am a celebrity like yourself, corporate or office office में like you know like a banker. Let's take a banker. Yeah. So if a banker comes to me and he has a sedentary lifestyle, and he does not have enough time to go for a run outside, and because of long hours, banking hours, he doesn't get time to be very active. उसका जो डाइट प्लान होगा वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट होगा, जिसमें यस मैं प्रोटीन की मिकदार जो है वो ज्यादा रखूंगी. क्यों ज्यादा रखूंगी? वरना आपका जो बॉडी है वो आपको एक किस्म का सिग्नल भेजता है कि यू आर हंग्री. व्हेन यू आर हंग्री, देन व्हाट इज अवेलेबल एट बैंक्स और कॉर्पोरेट ऑफिसेस, समोसास एंड बर्गर्स, और किसी ना किसी की बर्थडे हो रही होती है, केक्स. सो यू स्टार्ट इन टेकिंग दैट. तो इट्स बेस्ट दैट आप अपने लंच को इतना प्रोटीन बेस्ड रखें और आप कार्बोहाइड्रेट्स नेचुरल फॉर्म्स में लें, जैसे वेजिटेबल्स हैं और लेंटिल्स हैं, उसमें भी प्रोटीन की मिकदार ज्यादा है, पर कार्बोहाइड्रेट्स भी लेंटिल्स में होते हैं. तो दैट बिकम्स अ बैलेंस मीट विथ हाई लेवल्स ऑफ प्रोटीन व्हिच विल कीप यू फुलर फॉर लॉन्गर. मैंने ये पहले भी बात बताया था इन सबको कि कुछ साल पहले I had to go on a high protein diet क्योंकि वो एक किरदार का it was for a particular character कि ना आपने ना थोड़ा मसल पुट ऑन करना है. तो because of that मैं रोजाना 6 अंडे खाता था. उसके अलावा देखा मनता कि आपने देखे तासरात. नहीं I'm very happy, that's a very good really thing. And then chicken कि आपने चिकन ज्यादा खाना है. But and I think this is what I like to ask, क्योंकि जब हम कहते हैं प्रोटीन डाइट पे जा रहे हैं, हम प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं और चिकन खा रहे हैं, तो मुझे बताया गया था कि आप जो ना कम से कम एक मील में एक पूरा चिकन तो खाएं या आधा चिकन तो खाएं. सो आई मीन द थिंग इज how much protein is in a I don't know, in a quarter of a chicken or in a full chicken? Well, a 5 ounce of from 4 to 5 ounces, which is equivalent to 121 to 135 grams. You've got about 28 grams to 35 grams of chicken. दोबारा बताइएगा. Of sorry, let me repeat this again. From 121 grams to 135 grams of chicken, you have about 28 grams to 35 grams of protein. अच्छा ठीक है.
सो ये एक बोटी हो गया, नहीं? ये एक क्वार्टर का Quarter. आपने मुझे क्वार्टर बोला हाँ, था quarter ना, chicken. तो a quarter chicken is 4 to 5 ounces, which is equivalent to 120 132 to 121 grams. सुन लिया? I hope you heard that. Am I clear? Yeah, you're very clear. अच्छा ये बताइए कि आपने एटकिंस का जिक्र किया, बहुत सारे नाम हैं, जो लाइफस्टाइल, एक हेल्थी लाइफस्टाइल फॉलो Sorry, करना मैं चाहते आपको हैं. बिल्कुल काटिए. I will like हाँ, stop you over yeah, here. yeah. आपका जो initial जो start of the last question था Yeah. वो I want to address to that कि Okay. आप जब leaning cutting diet पे थे Yeah. और आपको बोला गया था कि आप अंडे खाइए और आप जो है वो एक पूरी चिकन खाइए एक मील में, तो whoever advised you that was correct. You Really? need to have more protein to develop that muscle mass, and it is important to have protein from natural sources जैसे meat है, lentils है, Right. वहाँ से eggs हैं. It's better to gain this from natural sources कि आप supplements use करें. Supplements जब आप use करते हो, आप एक किस्म के artificial sources of protein use करते हो, जिसमें preservatives भी ज़्यादा होते हैं, तो that is also creating toxicity to your Yeah. body. So Yeah. it's best to have protein in amounts that is recommended by your nutrition based on your goals, which is either muscling up, Right. buffing up, Right. or it's weight loss. Weight loss. Again, then there are females who have certain health issues like uric acid है. बिल्कुल. आजकल जो है वो COVID की वजह से a lot of men are suffering from uric acid. So that is because they are not having lean meat. They are having Okay. the sources of meat are not lean enough, and they are having more and more of red meat. मतलब जब आप lean कहती हैं, तो are you talking organic or are you talking something else? Lean No, mean lean से मुराद means क्या? that lean meat, like chicken is lean meat. ठीक है. Because it's got less amount of fat as compared ठीक to हो गया. beef ठीक हो गया. or mutton. Okay, ठीक हो so I'm not talking about just the grammage of protein. There's a grammage of protein 1-2 ग्राम जो है इधर मटन में ज्यादा है और बीफ में ज्यादा है, Yeah. पर उसके साथ आप फैट भी इंटेक कर रहे हैं. तो डिपेंड कि आपके डाइट का गोल क्या है. कि जैसे अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आप जो है यू विल स्टिक टू लीन मीट्स, एग्स, चिकन, टोफू, लेंटिल्स, ठीक है. बट इफ you cannot have a steak like a 8 to 10 ounce steak every day. Yeah. Yes, once in a while is okay to keep your balanced diet, but not every day. अच्छा, अभी अंडों का जिक्र किया मंतहा ने, लेकिन इससे पहले कि हम अंडों की बात करें, आज का जो गिव अवे का सवाल ये है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इन ए क्वार्टर पीस चिकन. अगर आप सुन रहे थे तो मंतहा ने इसका जवाब भी दे दिया, लेकिन क्वार्टर चिकन में कितने ग्राम्स प्रोटीन है. अंडों का आपने जिक्र किया. अमूमन हमारे यहाँ अंडे को विलन समझा जाता है कि अंडा नहीं खाना, एक अंडा बस बहुत हो गया. तो इसको थोड़ा सा हीरो है या विलन है? अंडा जो है वो हीरो है. अच्छा. हाँ, अंडा जो है, इसका ये मतलब नहीं आप अंडे पे आउट हो गए, like it is not a cricket term, but yes, anda as eggs is the best protein. It's the best protein. But I mean, I can have eggs breakfast, lunch, dinner. Really? Yeah, and Whole eggs? Sorry, Manta, whole eggs? No. What I do is I always include 1 egg yolk. Okay. And at least 3 egg whites to make it a meal. 1 egg yolk, 3 egg whites. Yes, but that is for me as like a woman. And that's your lifestyle also. Yeah. But for you, if you ask me, I would ask you, just add 2 egg yolks and about 3 egg whites. If you're having it as a meal. But then I have to also see your other work as well, like your blood work and everything. आपके सवाल भी हम तक पहुंच रहे हैं, और do send us your questions. I'm just having a look. Oh my goodness. So let's have a look. Javeria Rathod, क्या हाल है आपके? Javeria, right here. Is the protein need different for every individual? Yes, it is.
It is like I said when I started this conversation, Yeah. that when you come to me, I'm going to check your lifestyle, Yes. like a banker's lifestyle. वो sedentary है. ठीक है? सही हो गया. So for instance, for you, I might have other recommendations because you probably are staying indoors a lot with regards to your shoot hours or anything. I don't know what is your exposure to sunlight. I have to check all these things before I recommend a diet plan where the client feeds their requirements. कि एक जो like let's be very general. For instance, like as an athlete, अगर मेरी requirements होंगी like let's say more than 200 grams, more than 200 grams of protein after let's say a workout, even depending its strength or cardio. ठीक है? और एक let's say average male की requirements होंगी. Let's talk about the average first, not an athlete. Sorry, let's come back here. Because there are lots of people who are athlete की, exactly. ठीक है, So a male needs to consume 8 to 10 ounces of protein at a meal. Okay, 8 to 10 ounces. Okay, which is around 200 to 250 grams. All right, so a little bit even above that. So we are covering both grams and ounces here. And a female should consume, depending upon what their lifestyle is, between 4 to 6 ounces of protein, which is equal to 121 to 135 grams of chicken, and versus 31 to 35 grams, between 30 to 35 grams or 21 to 35 grams of protein. And I think ये अदनान का भी एक सवाल है कि kindly share what to consume in our daily life to level our protein portion. ये कुछ हद तक आपने इसका जवाब आप दे चुकी हैं. उसके अलावा Mavish, very important, chicken and PCOS. एक हाथ में PCOS, एक हाथ में chicken. Does it make it worse? Does it what is the role of chicken and PCOS? कोई है कोई इन दोनों के दरमियान में कोई? I'm so glad you're asking me this question because because a lot of clients that I'm getting these days are let's say are PCOS sufferers. I would not call them patients as such, but yes, they're suffering from this. Whether you call it a disease or a syndrome. PCOS जो है वो ज़्यादा hormonal imbalance है. And जब भी आपकी diet में किसी किस्म के MSGs या preservatives होते हैं या आपके जो है वो genetics में भी diabetes होती है, तो you are prone to PCOS. Right? But a good and healthy lifestyle can help prevent you from PCOS. ठीक है? That is, remove all kinds of simple carbs, sugar, processed items from your diet, like bakery items ज़्यादा हो गए, जो है वो sugar ज़्यादा हो गई, किसी के biscuits हो गए, and also like refined items जो हैं, refined carbs अपने diet में से बिल्कुल अलग कर दीजिए, and concentrate on natural sources of carbohydrates like fruits and vegetables. And also, I mean, and when it comes to protein, go for lean protein. You know, eggs, chicken, tofu, also try different sources of proteins at times. But yes, since I said that protein makes you feel fuller for longer, you need it. Otherwise, you will opt for carbohydrates and you will opt for simple carbs to fill yourself up. और ये बहुत मैं आप चाहूँगा कि आपके तवज्जो से ये बात आगे पहुँचेगी. जो PCOS है, इसको लाइफ सेंटेंस ना समझिएगा. जी इसके पीछे बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है, बल्कि जो हमारे माजरत के साथ जो डॉक्टर हजरात भी हैं उनमें भी बहुत एक अजीब मिसअंडरस्टैंडिंग. बहुत सारी खवातीन जिनको PCOS है वो समझते बस अब कुछ नहीं हो सकता मेरा. I mean, they suddenly think that PCOS is a long-term illness. It is not a long-term illness. Please, before contacting your doctors, try and contact your wellness coaches and nutritionists and try to improve your lifestyle. Prevent the disease from getting worse. First tool
lifestyle change, getting more protein in your diet, also lean proteins, reduce your carbohydrates, work out every 150 minutes a week, Yeah. and you are going to see you will reverse these effects until and unless there are other causes which are medical. और इल्म, जैसे मैंने कहा, जब आपसे मुलाकात होती है तो इल्म में इजाफा होता है, तो मैं चाहता हूँ कि जो हमें देख रहे हैं और मैं खुद न्यूट्रिशन के हवाले से अगर हमें हमारे एक इल्म में इजाफा हो, व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर अ ले पर्सन? अगर न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं तो व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स दैट वी नीड टू बी माइंडफुल ऑफ जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं? A balanced diet is what we all need to be mindful of, and not just to fill yourself in Yeah. order to give you a boost of energy, because energy can come from anything. Energy can even come from two tablespoons of sugar, and what we need to do is we need to always make sure that the sugar that you are getting is from a more organic source, which is like dates and Right. fruits. Protein you need to take with respect to eggs, lean meat, and carbohydrates also need to be in your system, because without carbohydrates you will not be able to function. So thinking that I will do just a protein diet and I will improve or lose weight, it is not the case. You will get other medical illnesses. So balanced diet is the best way to go, where 20% of fat should be during the day consumed, about 35% of protein, and the rest 60% or odd number has to be carbohydrate. आपने कुछ देर पहले ना डायबिटीज का भी जिक्र किया था, जो डायबिटिक हैं, व्हाट अबाउट देम? उनका प्रोटीन इंटेक, अंडों की अगर हम बात करते हैं, इज इट ओके फॉर देम टू कंज्यूम एग्स? Yes, why not? Why not? I mean, like I said, eggs are the leanest form Yeah. of a protein that you can have. They come under dairy, but fat-free or low fat dairy is very important for people who are suffering from PCOS as well, and diabetes, because in both the diseases we've got insulin resistance. So a lean protein Right. like chicken and eggs are great for diabetics. Great for diabetics. Yes. Huh? Wow. Okay. और yolk without yolk, ये भी बहुत एक सवाल है यार, yolk के साथ. Well, I Yeah, don't believe in completely taking the yolk out. I think Yeah. it's a myth. I feel that it's great for vitamin D absorption in your system. And there was a huge myth पहले about cholesterol, बिल्कुल. high cholesterol, वही low मैं आपसे पूछना चाह रहा था, cholesterol. जी. अब उन्होंने change करके बोल दिया कि all cholesterol is fine. Yeah. HDL cholesterol होती है जो activity levels को detect करती है. LDL cholesterol जो है वो आपके जो है वो that is basically your bad cholesterol. But later on they found out sometimes the cholesterol levels are generic. सही. So just getting rid of a food का पूरा macro, a food का element, just because कि आपको cholesterol, फिर वो खाने में nature और अल्लाह ताला डालते ही नहीं. यानी कि मैक्रो के हवाले का मतलब है कि प्रोटीन का जो पूरा एक चंक है, आपने जी. प्रोटीन ही निकाल दिया. बट यू सेइंग कि अंडे और जो कोलेस्ट्रॉल है, इज नॉट कि अंडे यार कोलेस्ट्रॉल कॉज नहीं, अंडे की जैसे आपने एग योक की बात की, तो मैंने कहा एग योक का सबसे द मोस्ट कॉमन myth that they have is that egg yolk से कोलेस्ट्रॉल होता है, एग योक से वेट गेन होता है. ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है. I want to get some of your questions. Giveaway का जो सवाल वो ये है, quarter chicken, how many grams of protein in a quarter chicken? I want to get to some of the बहुत सारे सवाल आए हुए मंता. Okay, let's talk about kids very quickly. I have a question here. Hina Safdar, कहाँ है आपके हिना? What's the recommended protein quantity for kids between 6 to 10? Well, sorry, मैं एक बात आपसे पहले कि आप yes. सवाल जवाब दें. Again, adding and then क्या लड़कियों में और लड़कों में कोई फर्क है in terms of yes, protein intake? yes. जी. Okay, so I would say that about 70 grams in each meal, which is 70 multiplied by 3, which is 210 grams of protein per day.
for kids between 6 and 10. 10. लड़कों के लिए और लड़कियों के No, लिए? अच्छा, लड़कियों के लिए. लड़कियों के लिए Yes. 210 ग्राम Yes, per day. And for boys, you can increase it by about 20% more. अच्छा. And that is how you reach to a number. अच्छा, I didn't know that. 20% more You're not for supposed boys. to know that, No, I Khalid. shouldn't have. I'm fine. Yeah, I mean, yeah, well, yes, but have you consulted a nutritionist? No, I haven't. So, well, you're doing it now. That's a good question. We've got Wafa again. वैसे तो सवाल का जवाब दे दिया, लेकिन Wafa पूछ रही है, Atkins good? It was such a thing in the 90s, and many of my friends lost weight. Yes. How do you want to respond to that one? Well, you know, it was really good at that time, just like keto is good Oy, oy, today. keto. So अब तो टी-शर्ट भी सब पहनते हैं ना, I keto, know, I'm yeah. on keto. So this is my answer. Friendly. Keto is something that I would not recommend, whether you have PCOS or diabetes, because you are increasing your triglycerides in your system, and you are also going to get deficient of B complex, which is ultimately going to result in hair loss, electrolytes and other issues. So keto is not the way forward. I was told, I just had a baby 8 months back, and I was told that just do keto immediately after you deliver, and that is going to make you lose weight, you know. But I did not, because I know my subject. I know that if I don't have a fruit, no, I did not disagree with No, that. but I could have imagined You know, the mindset. Yes, जो, you know, कि yes. जो लोगों के keto, you know, is great and so on. लेकिन yeah. Yeah, because I think it's like it's something like the Atkins. Yeah. Yes, it does. You know, well, just my bottom line is, please consult your nutritionist or wellness coach before you embark on any diet plan, whether it is Atkins or it is you know, keto. But I feel that a balanced diet with 30% protein, 30 to 35%, depending upon whether you are male or female. Sorry. 60% or above, depending upon your activity levels for carbohydrates, and 20% fat is important. सुनैना पूछ रही है कीटो डाइट के बारे से मंतहा ने जवाब भी दे दिया है. मुबशिर पूछ रहे हैं जी, परसेंटेज ऑफ प्रोटीन कंजम्पशन एट डिफरेंट एजेस. आपने बच्चों के बारे में बता दिया, लेकिन as I growing mean, adults- again, it depends. I mean, अगर for instance, मेरा I have an 8-month-old. You know, so right now I'm giving him sources of protein, but mashed, but very little at this point. So but he's very active. So again, depends upon your lifestyle. I don't know the lifestyle of a child. I'm not going to give a proper average protein. You can Google it if you want, but I have a more customized way of looking at things. So I might not be the right person to talk about this, because मेरा दिमाग एकदम से उनकी activity levels में चला जाता है, whether they're going to school, they're not going to school, how many hours they're going out to play, how many hours they are in, because obesity in kids has become a problem. बिल्कुल सही. एंड प्रोटीन ये भी नहीं है कि आप एक्सेस प्रोटीन आप बच्चों को दे दें. दैट ऑल्सो कन्वर्ट्स इनटू फैट. Protein also converts into fat, and that's what Atkins did. You started having more protein than your requirement of your body. So when you have more protein than what you require, the body जो extra चीज है उसको स्टोर की तरह फैट कर देती है. सवाल है जी, फैट की तरह स्टोर कर देती है. सॉरी, लेट मी करेक्ट. इम्पैक्ट ऑफ पोल्ट्री. ओके, ये सवाल है, फार्मी मुर्गी is related to infertility and hormonal issues, specifically for girls. ये सवाल है, what is the impact of chicken in our body? फार्मी मुर्गी के, एक तो ये भी एक डिबेट है, फार्मी मुर्गी या नॉन फार्मी मुर्गी. Yeah, so farmi murgi and non-farmi murgi. Well, obviously we would like to go for organic, okay, which is desi. Desi. Farmi is again, I would not call it artificial, but you know, it is not desi at the same time. I don't want to put words in anyone's mouth, but it's not organic, it's inorganic. Sahi. They have been fed differently. Sahi. They have again a different lifestyle. They have been their production is forced. Okay, so anything that is natural is very close to your system.
So here what's close to your system is the natural source, which is desi. I would recommend anyone who has access to a non-farmy source, please go for it. But जो farmy है वो तो I would we have no other. If you don't have choice and you're living in cities and urban areas, at least something is better than nothing. गिफ्ट हैम्पर के लिए आपको याद दिलाते चले कि जो सवाल है आपका आज, आप नीचे कमेंट्स में अपने जवाब भी जरूर बताइएगा. How many grams of protein in a quarter chicken? How many grams of protein in a quarter chicken? हम इस लाइव सेशन के आखिर में 2 नाम अनाउंस करेंगे फॉर गिफ्ट हैम्पर courtesy of राइट टू प्रोटीन पीके. आपके सवाल भी आ रहे हैं, आपके सवालों का जवाब भी देंगे. But let's go back to questions about chicken and eggs and so on. अच्छा, ये जो सवाल था पहले कि एज में और कितना प्रोटीन या कितना चिकन कंज्यूम करना चाहिए, आई थिंक ये भी था कि एज अडल्ट्स, आपने वैसे तो वाज़ेह कर दिया है, लेकिन जो लाइफस्टाइल है, यानी कि एक्टिव लाइफस्टाइल है या इनएक्टिव लाइफस्टाइल. इनएक्टिव लाइफस्टाइल से मुराद कि आप ऑफिस का काम करते हैं या करती हैं, डेस्क पे बैठे होते हैं, दैट इज एन इनएक्टिव लाइफस्टाइल, नॉट मच मूवमेंट. सो देन वुड यू सजेस्ट टू दैट पर्सन, मैन और वुमन, कि वो प्रोटीन कंज्यूम कम करें? जो इनएक्टिव है, जिनके जी. सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ऑफिस जॉब्स फॉर एग्जांपल. well, not necessarily. No. Yeah. Just like I said, a guy should consume around 135 grams of chicken every meal. Yeah. So that is consistent. ठीक है. अब उससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन योर एक्टिविटी लेवल्स. आ जाते हैं जी प्लांट प्रोटीन की तरफ. Plant supplements. Plant protein based that's my diet favorite होना चाहिए. subject. Why is that your favorite subject? Because that is the most frequently asked question. Like literally everybody asks me that question, that whether or not we should have supplements in our diet, and unnecessarily. Because you see, in a capitalistic economy, people push products, and protein, when it was formed, yes, it was helping people who could not source real forms of sources of protein. Yeah. They could not source it, or they could not include it in their diet plan all the time because उनकी sedentary lifestyle थी, वो desk lifestyles थी, तो उन्होंने add किए supplements. हम astronauts नहीं हैं. Supplements are for astronauts. You are everyday people. You try, and whether or not you are at work or you are not at work, try and source your protein from natural sources. आप अपने lifestyle में छोटी छोटी चीजें add कर लो. कबाब बना के रख दिए आपको जब भी भूख लगी, आपने 3 कबाब निकाले, उसको लाया तो एयर फ्राई कर दिए, या just cook it in a little bit of olive oil and you will be all set. Instead of just mixing protein, time आपको शायद 3 मिनट ज्यादा लगेंगे. 3 मिनट ज्यादा लगते हैं, एयर फ्रायर में, या उस पे तो ज्यादा जल्दी हो जाता है, 2 मिनट लगते हैं आपको. You just have to pre-plan yourself. Yes, include protein through natural sources is the bottom line, but not through artificial sources like supplements, until and unless it is advised by your nutritionist. अब सप्लीमेंट्स की बात आ जाती है तो प्रोटीन शेक्स की भी बात आ जाती है. That is exactly what I was talking about. अच्छा, Hamna's asking again, ये एक it's a source of worry for many people. High cholesterol, do I let go of egg yolk? Specifically आपने पूछा है, वैसे तो जवाब दे चुकी हैं, लेकिन एक दफा फिर अगर आप बता दें. Well, I don't know exactly if you're on medication or if you're not on medication. I also don't know the exact levels of your LDL, but there is no scientific proof that egg yolks ना खाने से आपके cholesterol levels कम हो जाएंगे. ठीक है. जहाँ तक कंजम्पशन की बात है, परसेंटेज ऑफ कंजम्पशन, एक प्लेट है हमारे सामने, उसमें द क्वेश्चन इज व्हाट परसेंटेज ऑफ आवर प्लेट शुड बी प्रोटीन बेस्ड. जब हम प्लेट को देखते हैं, हाँ, just like I said, around 35% to 35% or above, depending upon your lifestyle, to 20 it should be protein.
35% of your plate should be protein, 20% should be fats, and the rest should be carbohydrates, complex carbohydrates like oats and brown rice and lentils, different form of lentils. अब यहाँ भी एक किस्म की एक you know like confusion है कि लोग कहते हैं कि lentils are the only sources of protein. They are not. They are a very good source of protein, but they also have carbohydrates in them as well. तो आप completely उसको ignore नहीं कर सकते. Once again, giveaway question: how many grams of protein in a quarter chicken? Comments में हमें ज़रूर बताइएगा. जब ख़वातीन आपके पास आती हैं, तो what is the most sort of commonly asked question when it comes to individual protein intake या dietary requirements? The most common कि आप मतलब दीवार पे लिख दें. I know this is going to be a question. Yes. Please go to the note. Okay, so the most frequent question that I have been asked at the moment is कि chicken से hormonal imbalance होता है नहीं है. PCOS है मुझे तो मैं क्या मीट खाऊं या ना खाऊं. These are the two things that I have been frequently asked, and yes, supplements, the ones that you asked me. Yeah. But keto is the most common. It's the K word now. That everybody asks me that keto में प्रोटीन खा सकते हैं या नहीं खा सकते. अगर खा सकते हैं तो उसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए. तो मैं आप सबको ये बताना चाह रही हूँ कि कीटो में प्रोटीन की मिकदार ज़्यादा नहीं है. कीटो में प्रोटीन की मिकदार कम है, फैट की मिकदार बहुत ज़्यादा है. तो आप बेसिकली कीटो करने में यू आर लूजिंग आउट ऑन टू इम्पॉर्टेंट मैक्रोज, carbohydrates and proteins. So beware before you embark on that diet plan, because that is the most FAQ frequently asked question these days. So you can see you're not getting protein in that diet plan, and you are also not getting carbohydrates. And I think वो उसको sustain करना भी बड़ा मुश्किल होता है keto diet को. लेकिन as a consultant and as a wellness coach, is lifestyle more important for you than कि आप कौन से diet पर हैं? देखो, diet is the backbone of your lifestyle. That is something that you cannot let go of. And diet जो है वो, अगर आपकी diet सही नहीं होगी तो आपका ultimately lifestyle भी सही नहीं होगा. Because you will not be able to run, you will not be able to walk, you will not be able to climb, your immunity levels are going to go down, you feel fatigued more, you will lose focus. So आपकी lifestyle गिर जाएगी, the quality of your life drops. Right. So I think that having a balanced meal and to have the right amount of protein is very, very important. जो अगर हम अंडे और मुर्गी के हवाले से बात करें, the most common क्या कहते हैं misconception या myth अंडे और मुर्गी के हवाले से जो आपको सुनने को मिलता है? मोस्ट मिसकंसेप्शन ये है कि मुझे जो है PCOS हुआ है क्योंकि मैं मुर्गी बहुत खाती थी. अच्छा, मुर्गी की वजह से PCOS हुआ. Exactly. That is the most that is the biggest ignorant statement मैं बोलूंगी कि आप ये कह सकते हो, क्योंकि आपको किसी मीट की वजह से PCOS नहीं हो सकता. PCOS either आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस से होता है और हार्मोनल इम्बैलेंस से होता है. इंसुलिन रेजिस्टेंस से होता है और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से PCOS होता है, ना कि अंडे या मुर्गी की वजह से होता है. एक दफा फिर मैं जरा सवाल की तरफ जाऊंगा. बहुत सारे आपके सवाल आ रहे हैं और हमारा जो सवाल है आपके लिए वो ये कि how many grams of protein in a quarter chicken? We're giving away 2 hampers courtesy of Right to Protein PK. Atkins diet के बारे में हम बात कर चुके हैं. Protein consumption of different age, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं. और ये बहुत common concerns है, लेकिन एक सवाल यहाँ पर आया, यखनी as a source of proteins.
Yakhni is great. It's a source of yes. It is not source of protein. It is not. It depends upon if you are including pieces of chicken in it. But yes, it is broth. It might have a few amino acids, or it might have amino acids in it, but it will not have protein in it. You know, it will have your electrolytes in it, it will have energy in it, it will soothe you, it will have minerals in it, it will have vitamins in it. It is basically made from the bones of chicken, or the source of protein that you are using. That is chicken or red meat or whichever, whether it's a cattle form or what. But yes, it is not a source of protein, it is a source of nourishment with vitamins and minerals and potassium and electrolytes with amino acids in it, but not protein. So a quarter chicken has how many grams of protein? You're asking me this way too many times. I know, but I think we're getting people that have just joined in also. We might just, by the way, 21 to 35 grams of protein in a quarter chicken. अच्छा, ठीक है. मैं आपसे पूछ रहा था. आप सुन रहे थे? अच्छा, ओके. बहुत सारे सवाल आ रहे हैं न्यूट्रिशन के हवाले से. कुछ हद तक हम बात कर चुके हैं. और एग्स हेल्थी, ये भी मंतहा बता चुकी हैं आपको. एग्स जो हैं विलन नहीं है. सो ये आप याद जरूर रखिएगा. आपके जवाब भी हमें मिल रहे हैं. Is there something that you would like to add? हमारे इस पूरे गुफ्तगू में जो अंडे और मुर्गी के हवाले से हम बात कर चुके हैं, कोई ऐसी चीज हो, कोई ऐसा एंगल हो जो हमने शायद ना कवर किया हो? Okay. नहीं, I think कि हमने we have covered almost everything, but I want to revise again a couple of pointers. I think there's a lot of confusion between the grammage and the protein requirements. So let me just convert it properly. देखिए, a 4-ounce chicken or 112 ounce chicken is the size of your hand. अच्छा, okay. ठीक है? So every person's palm size is different. If your palm size is like, for instance, your requirement will be this much per meal. Wow. So that's amount of chicken breast you need to have at every meal. Okay? And another thing I want to add is that the exact grammage of protein in 100 grams has been narrated in different books at different times, but I have given you a range which is 21 grams to 35 grams. You will see different sources of grammage of protein. कहीं 20, अगर आप गूगल करते हैं 100 grams, तो आपको सबसे पहले मिलेगा 28 grams of protein. 100 grams of chicken is equal to 28 grams of protein. अब उससे ज़्यादा आप ounces में करते हो तो ounces are not exactly 100 grams. 1 ounce is 112 grams. So it will keep changing. Just keep it very simple and measure the size of protein with your palm and consume. अच्छा, आलम साहब पूछ रहे हैं, मंतहा बहुत सारे लोग हैं who are unable to digest protein, heavy on the stomach. Yes. वो क्या करें? Then they have to take, unfortunately, what the astronauts do, supplements. अच्छा, ठीक है. I mean, if the supplements are not also protein is what? Which source of protein is not there? He's not capable. ये बात नहीं किया उन्होंने जनरल. Is it vegetable source? Is it animal source? Is it both? Or is it also supplements? Then we mean those people who are unable to digest protein, animal protein, then we give them plant-based protein. If plant-based protein is also not digestible, then we go ahead and we give them supplements. ठीक है. Again, going back to some of the questions, हमारा सवाल जल्दी से हमें बताएं, जवाब बताएं. सवाल ये था कि in a quarter chicken how many grams of protein? We're about to announce the winners very shortly. आपके सवाल भी हम तक पहुंच रहे हैं. We're getting your questions also PCOS के हवाले से. There's a lot of concern, Mantahaa, about with PCOS and hormonal imbalance. Yes. अजीब. I feel it's becoming like a disinformation. Yeah, it is becoming like epidemic. I mean, hormonal imbalances now are not only in women.
I have seen kids like जो teenage boys हैं, because of their lifestyle, there is no playing of sports, just sitting in Adam was made a certain way. A man is supposed to go out and play and hunt and being exposed to physical activity. If he's not, then there will be a hormonal balance. There will be a hormonal balance in levels of testosterone. So that is what is happening. Women are working less because of the help around us, and also sources of protein which are not correct for their body. And also the diet fads that they are using, the fad diet plans. And men, because of sedentary lifestyles and because of the fact that they do not get much activity, they don't consume enough protein, and they don't consume either the protein that they consume is over their requirements or under their requirements, which stores as fat or deficiency. जब कोई फिटनेस एक लाइफस्टाइल अडॉप्ट करता है करती है, अमूमन एक फॉर्मूला होता है, मैंने कहीं पढ़ा था कि मैंने अगर प्रोटीन कंज्यूम करना है, दिस इज अ फॉर्मूला दैट आई कैन, उसमें वेट का भी है हिस्सा, उसमें लाइफस्टाइल का भी एक इंडेक्स होता है, आई थिंक इज एन एक्टिव लाइफस्टाइल, उसका ये नंबर है, उसका अगर इनएक्टिव that is something that your wellness coach construes themselves. I would not want to give figures which I'm not really so sure about, and the sources of those figures. I will give the figures that are academically correct, and you can source and search them. For instance, because हर कोई मतलब because Khalid, honestly, background of medical conditions and family history is also something that I need to see before recommending any kind of a diet plan. So I would not say कि इतना होना चाहिए, इतना नहीं. Again, it depends upon your age, your lifestyle. A 35-year-old can just sit around on his couch and be on websites and not be like walking around. And then there's a 35-year-old who will be walking around being a salesman. He's working for a pharmacy. He's going around in hospitals and everything. So his requirements might be different. And then what are his medical conditions? So I will not say, but yes, always remember that you should have the palm of your size, this much, इतना आपको जो है प्रोटीन हर मील में होना चाहिए. about 30 to 35% प्रोटीन आपकी मील में होना चाहिए. बाकी 20% fat through nuts, olive oil or good sources like natural ghee, and the rest should be brown rice, whole wheat, bread or multigrain bread, or also vegetables. They are sources of carbohydrates as well. Thank you, Mantahaa, for joining us. पहले कि हम अलविदा कहें, and hopefully we'll meet again very soon. आज का जो हमारा सवाल था, उसके जवाब हमें मिल चुके हैं. Correct answer 21 to 35 grams, और जो winner है, you're taking home the hamper courtesy of Right to Protein PK. Congratulations to Aksa and Sunaina. मुबारक हो जी, तालियां दी हमारे winners के लिए. क्या बात थी. You listened, you heard. Thank you so much. Mantahaa, thank you so much. और जो मैं लेके जा रहा हूँ कि जल्दबाजी ना करें. हम हर एक वो जल्दी बताएं, जल्दी मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन ये आपकी सेहत का सवाल है. Exactly. Take your time with it. As she said, consult a wellness coach, and listen to the information that is out there also. Exactly. This is exactly. And don't be scared of eggs, please. Don't be scared of eggs. Don't be scared of eggs. They're great sources of vitamin D, good cholesterol, and if you can't find chicken, make an omelette and have it. Nice one. I like that. Yeah. मैं भी आपकी तरह अंडे सुबह भी खा सकता हूँ, दोपहर भी खा सकता हूँ, रात भी खा सकता हूँ. I'm telling you. बल्कि अब इसके बाद ऐसा होना है. Thank you so much. Thank you so much. आपके बहुत शुक्रिया. Right to Protein PK के हवाले से बहुत मजा आ रहा है, और ये जो इन्फॉर्मेशन हम आपके तरफ और आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं, ये कोशिश है, और यकीनन आपको मजा आया होगा. और आपके फीडबैक जब हमें मिलता है, we do appreciate it. इसी तरह फीडबैक भेजते रहिएगा. Thank you so much जी. मेरा नाम खालिद मलिक है. Thank you Mantahaa once again. You are so welcome. अंडा और मुर्गी है ग़िज़ा की जान, सेहतमंद बनेगा अब पाकिस्तान. खुदा हाफ़िज़.